What is oxide? A compound of two elements in which one element is oxygen is called oxide. For example, if you see here, oxides, for example, if Na and O combine, let's make the formula also. So NH valence is 1, it is present group number 1. Oxygen valence is 2. Okay, so now cross form में लिख दें, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, the formula becomes, okay, similarly iron oxide, iron valence is 2, 3 भी होती है वैसे, and it is 2 as well. So both valency will be cancelled out. अगर cancel हो सके तो cancel करनी है पहले. Okay, so ये cancel हो जाएंगे, 2 1 and 2 1. Okay, so your formula is FeO. So you can fill in. So if valency of iron is 3, because why iron has changed its valency? Because it belongs to transition metals, and we know transition metals have variable valency. पर हमारे सिलेबस में कौन कौन से ट्रांजिशन इस तरह के? आयरन ही है, आयरन ही बेचारा ऐसा है जो अपनी वैलेंसी को चेंज करता है, बाकी और भी हैं बट वो ए लेवल में. ठीक हो गया? सो iron and oxygen, it could be 3 as well, so 2. Now these two numbers cannot be simplified. क्या ख्याल है वो है? तो ये इसी तरह से नीचे आ जाएंगे. क्या बन जाएगा फॉर्मूला? I hope you clear. So now let's talk about any other, like barium oxide. Okay, so barium oxide. Now consider barium belongs to group number 2. Its valence is 2. Oxygen belongs to group number 6, and group number 6 element also have valency 2. Cut हो जाएंगे, so formula BaO ही रहेगी. So these are some oxides. Okay, I hope you clear. So similarly, let me write. So these are oxides of metal. Why? Because we can see that metal is there. Metal is there with oxygen. Metal is there with oxygen. Metal is there with oxygen. So these oxides are called metal oxide. Please बोले. इनको हम कहते हैं metal oxide. It means as metal oxides are there in the chemistry, similarly non-metal oxides are also there in the chemistry. Okay. For instance, CO2, SO2, NO2. Okay. P2O3. So these all oxides contain non-metal with oxygen. So these are called non-metallic or non-metal oxides. Okay. So now one thing other important, what is that? Metal oxides are always of basic nature के होते हैं. किस नेचर के होते हैं? Basic nature के होते हैं. Why they are called basic? Because when they react with acids, they produce salt. They produce salt. So they are basic in nature. Every substance which react with acid to form a salt is called a base. So every substance is called a base if it reacts with acid to form a salt. So therefore, so these all are basic, and non-metal oxides are acidic in nature. Why? Because when they react with bases, then they produce salt. So they are acidic in nature. I hope you clear it. So it means we must remember that metals के oxide basic nature के होते हैं, ये याद कर ले बात, और non-metal के oxide acidic nature के होते हैं. I told you its reason as well. Metal oxide basic क्यों होते हैं? क्योंकि वो acid के साथ मिलकर salt बनाते हैं. क्यों जी? क्लियर? और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो बेसिस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं. तो जो चीज सॉल्ट बनाए, दो चीजें मिले, एक एसिड हो तो दूसरी फिर बेस होगी. दूसरी क्या होगी? दूसरी बेस होगी, क्योंकि प्रोडक्ट में सॉल्ट बन रहा है नॉर्मली. हाँ, सॉल्ट के साथ जो है ना वो वाटर बनना चाहिए या CO2 गैस रिलीज होनी चाहिए. आई होप यू क्लियर. Okay, so now let's go to notes. Okay, so I guess it's clear that a compound of two elements in which one is oxygen is called oxide. Basic oxides क्या होते हैं? These are oxides of metal. For example, sodium oxide, potassium oxide, calcium oxide. These are basic oxides. Why they are called basic oxide? Basic oxide react with acid or acidic oxides to form
सॉल्ट। तो ये उसकी लॉजिक है। ओके, सो एसिडिक ऑक्साइड, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ आ जाए ना ऑक्सीजन आ जाए, वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड होगा? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक उसकी नेचर होगी। ओके, सो क्योंकि वो बेसिस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। ओके, सो नाउ द थर्ड कैटेगरी इन आवर सिलेबस ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जैसे कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज दोनों की इन बिटवीन होती है, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। प्लीज बोले, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। प्लीज बोले, क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ओके, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटालिक ऑक्साइड की भी और मतलब बेसिक ऑक्साइड की भी और एसिडिक ऑक्साइड की भी, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, क्या मतलब? इफ दे कंबाइन विद एन एसिड दे बिहेव लाइक अ बेस। If they combine with an acid, they behave like a base. But when they react with the base, they behave like an acid. और दोनों केसेस में सॉल्ट ही बनता है। प्लीज बोले, दोनों केसेस सॉल्ट बनता है, बट इतनी डिटेल नहीं पेपर में पूछी जाती, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि some oxides have amphoteric nature. Why? Because they react with acid as well as base separately. Okay, so हमारी जो सिलेबस में ना वो जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक वो तीन ही है, ये आपने याद कर लेना। ठीक है जी। आप इसका एक छोटा सा टिप लिख सकते हैं। आप Zn से लिख लें जैन, पीबी, पंजाब, और एल्यूमिनियम आप क्या कहेंगे? वैसे क्या कह सकते हैं? आलू कह लें, जैन पंजाब आलू ने बड़ी अच्छा लगेगा। जैन पंजाब आया लिख लें। आया, आया आपको बस याद रहेगा कि भाई ए से शुरू हो रहा है, तो ए से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सो जैन पंजाब आया तो है, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल जैनब पंजाब आई, ये भी हो सकता है। ओके जी, सो जैन पंजाब आया। आप ऐसे ही जैसे भी इसको याद रखें, तो दिस इज अ टिप। सो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो दीज थ्री ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा ये चीजें पूछी जाती है। व्हाई दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक? बिकॉज एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट। तो दोनों केस में जो सॉल्ट बनता है, चाहे ये रिएक्ट करें एसिड के साथ या रिएक्ट करें बेसिस के साथ, तो ये भी पेपर में आते हैं। तो जी उसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली दे डोंट रिएक्ट विद एसिड और बेस, तो उनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। सो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो न्यूट्रल ऑक्साइड जो आपने याद रखने, कौन कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड and water. So if you see, these are also oxides. The first oxide is of carbon. The first oxide is of carbon, and the second oxide is of hydrogen. Water एक hydrogen oxide है. Carbon monoxide is oxide of carbon. So actually, so there are two famous oxides of carbon. One is CO and another is CO2. So remember, CO is neutral, while CO2 is acidic.